नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 10 द ओप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 3 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगा, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योमम अजाम अनादिम च वेत्ति लोका महेश्वराम असमुदः सामरयेषु सर्वा पापैः pramuchyate. He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme lord of all the worlds, he only undiluted among men, is freed from all sins. So यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवान के बारे में जानते हैं कि उन्होंने जन्म नहीं लिया है, जिसका कोई सोर्स मतलब शुरू ही नहीं है, जो भगवान को हर एक वर्ड में माने एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड, भगवान को सुप्रीम लॉर्ड के हिसाब से जानते हैं। ही ओनली अनड्यूलेटेड अमंग मैन, मतलब वही सारे चीज़ों से मतलब वो भ्रमित नहीं होता है, सारे पापों से मुक्त रहता है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। एज स्टेटेड इन द 7th चैप्टर, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यत्यति सिद्ध्यै. Those who are trying to elevate themselves to a platform of spiritual realization are not ordinary men. They are superior to millions and millions of ordinary men who have no knowledge of spiritual realization. But out of those actually trying to understand their spiritual situation, one who can come to the understanding that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the proprietor of everything, the unborn, is the most successful spiritually realized person. In that stage only, when one has fully understood Krishna's supreme position, one can one be free completely from all sinful reactions? Here the Lord is described as the word Aja, means unborn, but he is distinct from the living entities who are described in the 2nd chapter as Aja. बाकी लोगों से जो अज है मतलब जो अनबॉर्न है, उनसे भगवान अलग है। The Lord is different from living entities who are taking birth and dying due to material attachment. The conditioned souls are मतलब कुछ लोग इस सब जंजल से निकल जाते हैं एंड फिर और बर्थ नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान उन सबसे भी अलग है। The conditioned souls are changing their bodies, but his body is not changeable. Even when he comes to the material world, he comes to the same unborn. Therefore, in the 4th chapter, it is said that the Lord, by his eternal potency, is not under the inferior material energy, but is always in the superior energy. In the words Vetti Loka Maheswaram indicate that one should know that the Lord Krishna is the supreme proprietor of the planetary systems of the universe. He was existing before creation, and he is different from his creation. All the demigods were created within this material world, but as far as Krishna is concerned, it is said that he is not created. Therefore, Krishna is different even from the great demigods like Brahma, Shiva, and because शिव को भी मैं शैव रह चुकी हूँ। यहाँ पे बोला जाता है, ये वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। शैविज्म में भी बोला जाता है कि शिव ने बर्थ नहीं लिया है। ब्रह्मा का आई डोंट नो, लेकिन शिव का बोला जाता है कि शिव का भी आदि नहीं है, अंत नहीं है, कुछ भी नहीं। जितना हम विष्णु के बारे में गीता में सीखते हैं, उतना ही शिव के बारे में सीखते हैं। वहाँ पे विष्णु को बोला जाता है कि उनकी उत्पत्ति स्थल होगी, बट दैट्स द थिंग। एनीवेज, सो एंड बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ, यहाँ पे बोला जा रहा है विष्णु ही ब्रह्मा एंड शिव को बनाया। मैं ये तो शिव के बारे में मैं इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं शैव रह चुकी हूँ एंड मैं बचपन से शिव को अपना गुरु मानती हूँ। मैंने इतना ही यही सीखा है शुरू से कि शिव का बड़ा सा शिवलिंग था, विष्णु को एक तरफ एंड ब्रह्मा को एक तरफ जाने के लिए बोला गया था, और बोला गया था कि उसको ढूंढो, तो कोई आदि अंत नहीं मिला था। तो यही पता चलता है कि शिव का भी कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, उनको किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है। श्री कृष्ण इज देयरफॉर इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड, एंड एनीवन हु नोज हिम एज सच इमीडिएटली बिकम्स लिबरेटेड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। मेरे मान्यता के हिसाब से शिव और विष्णु को मुझे सिमिलर लगते हैं, अभी मान्यता का बात है। One must be liberated from all sinful activities to be in the knowledge of the Supreme Lord. क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, कोई युद्ध लगा था, विष्णु और शिव एक दूसरे के से लड़ रहे थे एंड लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी, योगों से चल रही थी, क्योंकि वो किसी बात पे गुस्सा थे। तो गणपति ने आके वो लड़ाई खत्म करी थी, और ये सिद्ध हुआ था कि क्योंकि दोनों सिमिलर एनर्जीज के हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे, कोई किसी से ज़्यादा शक्तिशाली कम शक्तिशाली नहीं है, इसलिए शिव और विष्णु है जो वो समान है। इसीलिए कोई इस युद्ध को ना ही जीत पाया ना ही हार पाया, वो वहीं से चलता ही जा रहा था।
So one must be liberated from all sinful activities to be in the knowledge of the Supreme Lord. Only by devotional service can he be known, and not only by any other means, as stated in Bhagavad Gita. One should not try to understand Krishna as a human being, as stated previously. Only a foolish person thinks him to be a human being. This is again expressed here in different ways. A man who is not foolish, who is intelligent enough to understand the constitutional position of the Godhead, is always free from all sinful reactions. तो जो इंसान को पता है कि भगवान कोई इंसान नहीं है, वो भगवान है और इंसान का रूप लिए है, वो सबसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, जो ये समझ जाते हैं वो सारे पापों से मुक्त होते हैं. If Krishna is known as the son of Devaki, then how can he be unborn? That is explained in Srimad Bhagavatam. When he appeared before Devaki and Vasudeva, he was not born as an ordinary child. He appeared in his original form, and then he transformed himself into an ordinary child. Anything done under the direction of Krishna is transcendental. It cannot be contaminated by material reactions which may be auspicious or inauspicious. The conception that there are things auspicious and inauspicious in the material world is more or less a mental concoction, because there is nothing auspicious in the material world. Everything is inauspicious because the very material nature is inauspicious. We simply imagine to the auspicious. Real auspiciousness depends on activities in Krishna consciousness in full devotion and service. Therefore, if we at all want our activities to be auspicious, then we should work under the direction of the Supreme Lord. Such directions are given in authoritative scriptures such as Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, or from a bona fide spiritual master, because the spiritual master is the representative of the Supreme Lord. His direction is directly the direction of the Supreme Lord. The spiritual master's saintly person and the scriptures direct in the same way. There is no contradiction in these three sources. All actions done under such direction are free from the reactions of pious or impious activities of the material world. The transcendental attitude of the devotee in the performance of activities is actually that of renunciation, and is called sannyasa. As stated in the first verse of the 6th chapter of Bhagavad Gita, one who acts as a matter of duty because he has been ordered to do so by the Supreme Lord, and who does not seek shelter in the fruits of his activities. Anashritah karma phalam is true renouncer. जिन्होंने ऐसा नहीं सोचा मैंने ये कर्म किया, इसके बदले मुझे क्या मिला, ये किया, इसके बदले में क्या मिला, कुछ भी नहीं चाहिए, बस काम करके भगवान के हाथ में छोड़ दो. Anyone acting under the direction of the Supreme Lord is actually a sannyasi and a yogi, and not the man who has simply taken the dress of sannyasi or a pseudo yogi. तो जो भगवान की इच्छा के हिसाब से उनके डायरेक्शन में आके काम करते हैं वो रियल योगी है. ऐसा जो सिर्फ ढोंगी होते हैं वो बस योगी जैसा खुद को सजा करके बैठे रहते हैं, लेकिन जो रियल योगी होते हैं उनके अंदर अलग ही एक फ्लेवर होती है जो आपको उनके सानिध्य में आके ही उनकी वाइब्रेशन से पता चल जाएगा. ये था श्लोक नंबर 4. अगले वीडियो में हम 4th and 5th श्लोक तक क्लब किया हुआ एक श्लोक है, नंबर 4 and 5 को एक साथ में हम उसको कवर करेंगे. वो काफ़ी बड़ा श्लोक है क्योंकि 4 and 5 मिक्स करके किया है ना. सो इट्स लाइक अ 4 पेज का श्लोक है, 4 पेजेस है. ऑब्वियसली 2 पेजेस का एक श्लोक होगा. तो इस हिसाब से 2 श्लोक एक साथ में क्लब किया हुआ है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.